So hey everyone, in this video we will study about the taxation system in India. Specific and ad valorem tax imposed on specific things like unit, weights, length, size or volume. Specific things. Cloth in its length units. Ad valorem tax value of the commodity normal 5%, luxury पे 28%. जो जितना महंगा उतना ज़्यादा टैक्स उस पर लगता है. Constitutional status of taxation. The government of India is authorized to levy taxes on individuals and organizations according to the Constitution. Article 265 of the Indian Constitution states that the right to levy or charge taxes has not been given to any except the authority of law. Article 265 of the Indian Constitution states that the right to levy charges taxes has not been given to any except the authority of law. Article 265 seventh schedule has defined the list up to which central state or both center and state has levy taxes. seventh schedule limited 265 taxation की बात करता है. Limited financial power have been given to the local government which are enshrined 9th and 9th A of the Constitution. List Schedule A. State list, union list and concurrent list. State list. Subject matter. State. Article 246(3). To make decisions on the sub-matter. Example, education. Sub-matter. Center. List 1 of the 7th schedule. Defense, nuclear weapons. Concurrent list. Subject matter, center, state दोनों साथ में बनाते हैं. 246 स्टेट लिस्ट. 265 मेनली बात करते हैं टैक्सेशन की. सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ फर्स्ट एंड सेवन्थ शेड्यूल. न्यूक्लियर फर्स्ट एंड सेवन्थ यूनियन लिस्ट. देखो पंचायत गवर्नमेंट लेवल. पावर रिस्ट्रिक्टेड. Power enshrined to the center plus state. Power enshrined to the center plus state. Panchayats, government level, powers restricted. Power enshrined to the center plus state. Distribution of the tax. List 1, List 2, List 3. List 1. In the 7th schedule of the Constitution has the powers of the central government listed in the entries 82-92B. List 2. In the schedule has the power of the state government listed in entries 45 to 63. In the schedule has the power of the state government listed in entries 45 to 63. List 3. Entry 97 of the list 1 and 7th schedule contains residuary power of the taxation belonging only to the center. List 3. Only to the center. List 3. The share of the states in the central states for the 2021-26 period recommended to the 41%, same as that of 2020 to 21, applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. The adjustment of 1% is to provide for the newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of the center. This is less than 42% share recommended by 14th Finance Commission of 2015-20 period. अभी फिलहाल 16th Finance Commission चल रहा है. Taxation system. Taxes can also be categorized as either regressive, proportional or progressive. Regressive, proportional or progressive, and the distinction has to do with the behavior of the tax as the taxable base. प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल. प्रोग्रेसिव बर्डन रिच पे ज़्यादा होता है, पुअर पे कम होता है. रिग्रेसिव मतलब इम्पैक्ट मोर ऑन पुअर एंड देन रिचर पर्सन. प्रोपोर्शनल मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स, जितना इनकम उसके हिसाब से टैक्स देना होता है. डिग्रेसिव टैक्स मतलब एज इनकम इंक्रीज टैक्स इज कांस्टेंट. डिग्रेसिव मतलब इनकम तुम्हारा कितना भी हो लेकिन टैक्स कांस्टेंट ही होता है. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. वन नेशन वन टैक्स. जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स. क्योंकि ना पहले टैक्स वाला सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. 17 प्रकार के टैक्सेस थे. तो है ना, लोगों को पता नहीं चल पाता था कि टैक्सेस मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था टैक्स सिस्टम हमारा. कौन से गुड्स पे कितना कौन सा टैक्स लग रहा है हमें पता नहीं होता था. इसलिए जीएसटी लाया गया 2017 में टैक्स सिस्टम को और
है ना जनरल बनाने के लिए, ताकि सबको बहुत ईजिली समझ आए। तो इसलिए वन टैक्स वन सिस्टम, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, वैट, मोड वैट, सनवैट सब एक में ही इंक्लूड कर लिया गया। अलोकेशन ऑफ टैक्स फंड्स, टैक्स रिलेटेड कोर्ट्स कॉल्ड टैक्स ट्रिब्यूनल, टैक्स रिलेटेड कोर्ट को क्या कहते हैं हम, टैक्स ट्रिब्यूनल। इट इज़ अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। इट इज़ essentially a tax only on value addition at each stage, as input taxes credit paid at each state will be available in the next state of value addition. Under GST, consumer will bear only a GST charged by the last dealer in the supply chain, thus eliminating the cascading effect. जीएसटी टैक्स स्लैब्स देखो 5%, 12%, 18%, 28% पे लाया गया। 4 to 5 स्लैब्स है हमारा। देखो 5% मतलब 5% टैक्स लगाया जाता है हाउस होल्ड नेसेसिटीज़ सच एज एडिबल ऑयल, शुगर प्राइजेस, टी एंड कॉफ़ी। 5% टैक्स। 12% दिस इंक्लूड्स कंप्यूटर्स एंड प्रोसेस्ड फूड, दिस इंक्लूड्स कंप्यूटर्स एंड प्रोसेस्ड फूड। 12% टैक्स। 18% हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप्स, कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल। 18%। ठीक है। 28% लग्जरी आइटम सच एज स्मॉल कार्स, कंज्यूमर्स ड्यूरेबल लाइक एसी एक्सेट्रा। तो ये लग्जरी गुड्स पे लाया जाता है। ये हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप गुड्स इस पे लाया जाता है। 12% लाया जाता है कंप्यूटर एंड प्रोसेस्ड फूड, कंप्यूटर्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स पे। और ये हमारा डेली नेसेसिटीज़ के सामान 5% टैक्स। Goods and Services Tax Network, Goods and Services Tax Network. The central and the state government have jointly registered Goods and Services Tax Network as a not for profit to provide shared IT infrastructure and services to central and state government taxpayers and other stakeholders. Initially, the center and state together hold 49% stake in the company. Cabinet in 2018 converted the GST network into the government-owned company. The stake of the private companies will be acquired by the center and the state government. The restructure GST and with 100% government ownership shall have equity structure between center 50% and state 50%। 50% का स्टेट और सेंट्रल कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों लेते हैं टैक्सेस। टैक्स कंज्यूम्ड अंडर जीएसटी एट सेंट्रल लेवल, एट स्टेट लेवल। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स स्टेट लेवल पे, स्टेट वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कंट्रोल एंड entry tax, purchase tax, luxury tax, tax on lottery gambling, luxury tax, tax on lottery gambling. Component of GST, central GST, state GST, integrated GST, tax evasion, tax avoidance. GST Council, chairperson Union Finance Minister, देखो chairperson, vice chairperson to be chosen amongst the ministers of state government members, MS Finance and all ministries of finance, taxation of the each state. Quorum 50% of total members, decision by 75% majority. देखो फिर है ये अपना एट सेंट्रल लेवल, एट स्टेट लेवल। एट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स स्टेट लेवल पे। एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रियो एंड एंट्री टैक्स, परचेज सेल, लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी गैम्बलिंग, ये स्टेट लेवल वाला होता है। और सेंट्रल लेवल का होता है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब है अपना सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन सा होता है, CST, WAT, सेनवैट, GST। देखो CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इट
all measured and become GST. GST Council recommended one nation, one tax component of GST. GST का central GST, state GST और integrated GST. Reason to change in the GST by budget 2021-22 aimed at helping small and medium business to tide over pandemic introduced disruptions. In case of a delay in deposition tax, business needed to shell out interest up to the ratio of 18%. Business having turnover above rupees 5 crore won't be required to get their accounts audited. Tax reform. In the year 1991, tax reforms were initiated by India following is the economic crisis of 1991. 1992 में देखो Dr. Raja J. Chillian Tax Reform Committee was established. Recommendations: broaden the tax base, lower marginal tax rates, reduce rate differentiation, simplify the tax structure. बहुत सारी कमिटीज़ आई थी, बहुत सारी कमिटीज़ टैक्सेशन पे आई थी, कौन कौन से उनके रिकमेंडेशंस को हमें लेना होगा वो सब. 2002 Kelkar Committee. 2002 the government set up two task forces, that is on direct and indirect taxes, under chairmanship of Dr. Vijay Kelkar. Recommendations: tax force for direct taxes to raise the basic exemptions, limit in income tax from rupees 50,000 to rupees 1 lakh. फिर क्या है? टास्क क्यों लिखा है? Task forces on indirect taxes. The committee recommended widening the tax net by expanding the services tax base and improving the taxpayers' compliance. Both the recommendations were accepted by the government. In 2013, under the chairmanship of Dr. Parth Sarthi Shom, Tax Administration Reforms Commissioner. Recommendations: CBCT and CBEC should coordinated and eventually be merged within 10 years. Taxpayer services to be included. Taxpayers देखो बहुत सारे recommendations है कि उनके services को include करना चाहिए. Taxpayers Council established under the Finance Minister. The scope of PAN card needed to be increased. ये सब recommendations, ये सब नहीं पूछता है वैसे एग्जाम में. Key changes made in the taxation in budget 2021 to 2022. Faceless assessment and faceless appeal introduced. Exemption from filing tax returns for senior citizen over 75 years. Agriculture and infrastructure development cess. It will be levied on petrol and diesel at the rate of rupees 2.5 and 4 per litre respectively. The tax holiday for startup has been extended by 31st of March 2022. Social and economic objective of taxation: to aid the economic development like road, bridges, flyovers, railways, ports, etc., to provide welfare policies for the marginalized section of society, to fund public health and education expenses like schools, hospitals, etc., to improve economic distributions, to bring about rapid economic growth, reduce inequalities of income, promote stability, and to achieve the socio-economic objectives.